अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर अली और आप देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन। आज हम ये किचन को की फिक्सिंग करने लगे। वैसे नॉर्मली इसके ऊपर स्लैब्स लगती है मार्बल की, लेकिन हमने ट्रेंड थोड़ा सा चेंज किया। हम इसके ऊपर 24-24 की वुडन शाइन सरेमिक टाइल लगाने लगे हैं, मगर इसका साइज़ जो है ना वो मिस्त्री ने रख दिया थोड़ा सा बड़ा। इसे हम पहले मैनेज करेंगे टाइल के हिसाब से। इसे अभी हम चेक करते हैं कि इसका साइज़ क्या है। इसका साइज़ है पूरा 2 फुट। हमने इसे करना है 23.5 इंच। 23.5 इंच रखेंगे तो इसके नीचे जो है राइज़र पीस भी लग जाएगा। ये स्टैंड ऑलरेडी जो है वो तेगों से जो हमने है बढ़ा के बनाया हुआ स्टैंड, तो इसके नीचे जो है वो लग जाएगा कैबिनेट लकड़ी का। ये ग्राइंडर हमारे पास है, डिस्क डायमंड ऊपर चढ़ी हुई है। इससे हम स्टैंड को कटाई करके पहले बराबर कर लेंगे। अगर आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर कुकिंग चैनल्स का लिंक है, जाइए उसे विज़िट करें, ज़रूर विज़िट करें और जाके सब्सक्राइब करें और अपनी सपोर्ट शो करें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अभी आप देख सकते हैं हमने इसके जो है ज़ीरो लेवल के इसके ऊपर लेवलिंग पॉइंट इंस्टॉल कर दिए। उस साइड पे भी है, उस कॉर्नर में भी है। ये बिल्कुल आपस में भी ज़ीरो ही है सारा, और इस रुख भी सारा ज़ीरो लेवल है। और इसके ऊपर पहले हम प्लस्तर करेंगे अच्छे तरीके से, और फिर उसके बाद उसके ऊपर टाइल फिक्स करेंगे। ये देखें जी, एक बात मैं आपको ज़रूरी और बताऊं कि ये 10 फुट का हमारा स्टैंड और पूरे 10 फुट का ही राड है। तो आपके पास इतना लंबा राड होना चाहिए जो एक ही राड इसके ऊपर फिर जाए, ताकि इसके अंदर कोई फ़र्क ना आए। जब आप 2 राड इसके ऊपर फेरेंगे, छोटा राड 2 बार फेरेंगे तो उसके अंदर फ़र्क आ जाएगा। जो मर्ज़ी कर लें, कुछ ना कुछ फ़र्क आ ही जाता है। इसलिए टूल आपके पास पूरा होना चाहिए।
ही है टाइल, बहुत ही खूबसूरत। ये वॉल टाइल है 12-24 की, ये जो है फ्लोर टाइल है 24-24 की। अभी इसका ये राइजर पीस भी लगना, फिर इसकी जो है खूबसूरती और जो है वो देगी। और मेरे हिसाब से तो इसकी शाइनिंग मार्बल स्लैब से बहुत ज़्यादा है। यहाँ से ज्यादा है यस हो गया, यस। नंबर प्राइस का नाम नहीं पता। बहुत काम है, खाना बनाना तो बहुत है, अरे बात लगेगा तो कल है।
ये देखें जी, हमारी किचन की स्लैब भी लग चुकी है और जो है इसकी वॉल भी लग चुकी है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। टोटल वुड हुई बढ़िया वुडन। ये सिंक वॉल भी हमने निकाल दिया था, साथ ही मैंने कहा फिक्स हो जाए, बाद में कौन निकालेगा। इसका राइज़र पीस भी लग गया है। तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, उसके अंदर मेरे दूसरे चैनल का लिंक है जिसका नाम है माई स्टाइल इजी कुकिंग। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।